ठीक है गाइस, मैं स्टार्ट करा दूं। हाँ, गॉट द आइडिया। वो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि स्पेलिंग भी एक जैसी आ रही है। तो यार अब आज जो है वो नेक्स्ट वाली वर्किंग करनी है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बिफोर आई स्टार्ट मैं स्टाइलिश को जरा चेक कर लूं। ब्लैक हो गया, लेट दिस, इसको रेड कर देते हैं, ग्रीन, लास्ट वाला आई डोंट नो, ऑरेंज वुड डू। ठीक है, सो क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है ना, पहले बेसिक पॉइंटर्स देख लेना। सो the name of the topic is essentially magnetic field, and regarding the working, that is concept of magnetic field, pehle basic pointers bata दूं. So the strength of magnetic field um, is also called magnetic field strength, or it is sometimes referred to by the term magnetic flux density. So remember, gravity ke andar we used to use the term gravitational field strength. Electrostatics ke andar it was electric field strength. So magnetic field ki strength is either referred to by the term magnetic field strength, or alternately by the term magnetic flux density. In your CIEs, uh, they more often than not use the term magnetic flux density. So I guess ये term ज़्यादा sensible है use करना. ठीक है, so the strength of the magnetic field can either be referred to by the term magnetic field strength, or alternately by the term magnetic flux density. Next is, um, so the magnetic flux density is denoted by the symbol of capital B. It is measured in units of Tesla, and magnetic flux density, or the strength of the magnetic field, is considered to be a vector quantity where the direction is from north to south. Okay, so the strength of the magnetic field denoted by the term magnetic flux density, denoted by the symbol of capital B. It is measured in units of Tesla. It is a vector quantity whose direction is from the north pole of the magnet towards the south pole. So जो पहली working करनी है, that is, how can we calculate the force experienced by a charged particle as it enters a magnetic field. Okay, so the first working is how to calculate the force experienced by a charged particle as it enters a magnetic field. तो पहले फॉर्मूला बता दूं और फिर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से सिनेरियोज में फोर्स लगता है वर्सेस कौन से सिनेरियोज में फोर्स नहीं लगता. So as far as the expression is concerned, the force experienced by a charged particle as it enters a magnetic field is given by the relationship F is equal to BQV. F in this case is force, that's measured in newtons. B is the strength of the magnetic field, so that is magnetic flux density measured in Tesla. थोड़ा सा zoom out कर रहा हूँ. Q is the charged particle which is going to be placed in the magnetic field, and V represents the velocity of the charged particle. Okay, so the expression is given in the form F is equal to BQV, where F is the magnetic force. On the left hand side, I have constructed a region of magnetic field. So let's see कि कौन से सिनेरियोज में फोर्स लगेगा वर्सेस कौन से सिनेरियोज के अंदर फोर्स नहीं लगेगा. चार डायग्राम्स बनाने हैं. So first diagram. Okay, let's suppose the red dot over here represents a charged particle. तो मैं charged particle को plus q करके लिख देता हूँ. और first scenario के अंदर let's assume that the charged particle is at rest, so it's not moving. So a charged particle at rest is positioned in a magnetic field. First scenario के अंदर, since the charged particle is not moving, so the magnetic force is going to be zero. ये पहला scenario हो गया, that if a charged particle is placed in a resting position in a magnetic field, then it will not experience any force. Okay, second scenario, the same charged particle
is now shown to be moving with a velocity v, but the direction in which the charge particle is moving, as you can see, that direction is parallel to the field lines. So once again, the charge particle is not going to experience any force. ठीक है, so दो cases हो गए. तो पहला scenario, no force is experienced when a charge particle is in a resting position. Second scenario, again, no force is experienced because the charge particle is moving parallel to the field lines. तो ये दो cases हो गए. Third वाला scenario, what if the same charge particle now moves in a manner such that it is perpendicular to the field lines? इस case के अंदर, as the charge particle moves, it will cut with the field lines. So यहाँ पर you would expect that the magnetic force is going to be maximum, and this force is going to be given by the relationship BQV stated earlier on. तो ये आपके force का maximum amount बन जाएगा. ठीक है, तो first case में no force is experienced if a charge particle is in a resting position in a magnetic field. Second case में, if a charge particle moves with a velocity parallel to the field lines, again there is no magnetic force. Third case में, if the charge particle moves perpendicular to the field lines, then it cuts with the field lines and consequently it experiences maximum magnetic force. तो ये तीसरा scenario हो गया. और एक fourth वाला obvious case, when the charge particle neither moves parallel nor will it move perpendicular, but as you can see in the fourth diagram, the charge particle makes an angle with the field lines. And let's suppose the angle is marked and labeled as theta. The fourth वाले scenario में, the charge particle moves in a manner such that it makes an angle of theta with the field lines. यहाँ पे resolve करना पड़ेगा. So the component which I'm constructing with the green marker right now, that will be v cos theta. Since this component is parallel to the field lines, तो ये force में कोई contribution show नहीं करेगा, तो मैंने इसके साथ cross लगा दिया. Whereas the other component which I'm constructing with the orange marker right now, this component will be established as v sine of theta. And since this component is perpendicular to the field lines, so surely this component will create a force. The final formula आपका बनेगा, that will be expressed as F is equal to B times Q times V sine of theta. ये तो चार scenarios में आप इसको break down कर सकते हो. The first case, if the charge particle is at rest, it does not experience any force, so zero. Second case में, if the charge particle moves parallel to the field lines, again it doesn't cut the field lines, so no force. Third वाले case के अंदर, if the movement is perpendicular, then maximum force. For last वाले case में, if the charge particle moves at an angle, जिस तरह रोहिल ने suggest किया था, components की working करनी पड़ेगी. So the vertical component shown with the orange marker, which is v sine theta, will be used. So the magnetic force in this case turns out to be F is equal to B times Q times V sine theta. All right. Further आगे देखते हैं. तो जरा टिक्स वगैरह और क्रॉसेस वगैरह ये जरा इरेज आउट कर दूं. सही है. अब जो नेक्स्ट वाली वर्किंग है, दैट इज how can we define the term magnetic field strength? So in terms of definition, a region, this definition is based on the diagram. तो अगर आप wordings को read करोगे ना, तो you can relate these wordings with the diagram. So region in which a moving charge experiences a force. ठीक है, मैं moving को highlight कर provided that it is not moving parallel to the field line. ठीक है, so
magnetic field strength is basically a region. अच्छा, even if they ask you कि magnetic field को define करो, तो भी यही wording लिख देना. So even if the question is define the term magnetic field, so region in which a moving charge experiences a force, provided that it is not moving parallel to the field lines. So next definition, if they ask you to define the term Tesla, Tesla was the unit of magnetic flux density. मैंने top पे लिखा हुआ था, आपको मिल भी जाएगा. So if they're asking you to define the term Tesla, so वो क्या बन जाएगा? So if a force of 1 Newton, its definition is basically based on the formula. अगर आप फॉर्मूले को फॉलो करोगे ना, तो आई थिंक आप डेफिनेशन के साथ फॉर्मूले को रिलेट कर लोगे. So if a force of 1 Newton acts on a charge of 1 coulomb, which is moving at 1 meters per second in a direction perpendicular to the field, then the strength of the magnetic field is said to be equal to 1 Tesla. So basically, the definition, I'll just read it again, is based on the formula F is equal to BQV. So if a force of 1 Newton acts on a charge of 1 coulomb, which is moving at 1 meters per second in a direction perpendicular to the field lines, then the strength of the field is said to be equal to 1 Tesla. All right. So we have seen the formula. We have seen the situations where the force is going to be maximum versus where the force is going to be minimum. We have also established magnetic field को कैसे define करते हैं, and we have established Tesla को कैसे define करते हैं. सब थोड़ा सा और आगे इस working को continue करते हैं. So the next thing is, थोड़ा सा zoom out कर रहा हूँ. So now the next working is, how can we find out the direction of this force? See, so if you're interested in finding out कि जो magnetic force लग रहा है, अगर उसकी direction में आपको interest हो, तो magnetic force का direction कैसे calculate करते हैं? अच्छा, gravitation force का direction हम हमेशा निकाल लिया करते थे without any problem, vertically downwards. Electrical force के अंदर भी issue नहीं होता था, because electric field में ये होता था कि if it's a positive charge, it will go towards the negative, and if it's a negative charge, it will go towards the positive. So gravitational force and electrostatic force was really not an issue. उनकी working ना भी करें तो पता चल जाता था. But magnetic force के लिए direction निकालने की एक proper working है, तो वो आपने O levels में भी करी हुई थी, और मैं quickly आपको recap भी करा देता हूँ. तो डायरेक्शन को वर्कआउट करने के लिए वी मेक यूज ऑफ, जो ओ लेवल्स में आप करते थे, मेक यूज ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फॉर दोज ऑफ यू जिन लोगों को फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अब याद नहीं है, तो मैं जरा रिकैप साथ साथ करा दूं और फिर उसको अप्लाई भी कर लेते हैं. पहले मैं रोहिल का आंसर, बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव नेचर. सर इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ सही है, ठीक है. सो मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायरेक्शन कैसे फिगर आउट करेंगे ना? सो एज आई सेड, इसके लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे. ओ लेवल्स में भी किया था, मैं रिकैप करा दूं कैसे यूज किया था. सो फर्स्ट फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड should point in the direction of the magnetic field, that is from north to south. A second finger, you can say it can either point in the direction of current, ये भी wording सही है अगर आपको यूज करनी हो तो, or alternately you can say the second finger should point in the direction in which a positive charge is moving. The reason why they accept both wordings is because current is basically defined as the flow of positive charge. So either of the two wording is fine. So the second finger should point, either you can say in the direction of current, or since current is the flow of positive charges, so मैंने slash करके लिख दिया है direction in which a positive charge is moving.
अभी अप्लाई करके देख लेते हैं. And then the thumb is going to give us the direction of the force. So thumb से force मिल जाएगा. अच्छा, the question does arise कि what if it's a negative charge, तो फिर क्या करेंगे? So you all know positive and negative show opposite behavior. So in case if it's a negative charge, तो क्या करेंगे? मैंने wordings लिख दी है. So on a negative charge, the second finger will point opposite to the direction in which a negative charge is moving. Okay, so it's pretty simple to remember that for a positive charge, the second finger points in the direction in which a positive charge is moving. And in case if it's a negative charge, since negative follows opposite behavior, so then the second finger will point opposite to the direction in which a negative charge is moving. So मैं आपको डायग्राम के ऊपर आप भी जरा अप्लाई कर लीजिएगा और जरा लेफ्ट हैंड अप्लाई करके देखते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन कैसे फिगर आउट करेंगे. So in the diagram, there is a positive charge given to you. It is traveling with the velocity of v. It is traveling in the right direction from left to right. The direction given है. And the magnetic field is pointing into the page. So वो भी diagram पे given है. ठीक है, अब if you are asked कि आपको determine करना है ये positive charge कहाँ जाएगा. So let's start with the placement of the fingers of the left hand. So मैंने wordings लिखी हुई हैं, आप जरा statements के साथ साथ follow कर लो. So the first finger for magnetic field. तो मैंने इसलिए see, so first finger is going to point in the direction of the magnetic field. Cross का मतलब है magnetic field is to the page, or you can say into the screen. So your first finger should point into the screen. तो left hand की first finger को, left hander, उसकी first finger को into the screen point कर दीजिएगा. साथ साथ कर भी लें. Then the second finger. So the second finger should point in the direction in which a positive charge is moving. So diagram से देख लीजिएगा. Where is your positive charge moving? नजर आ रहा होगा आपको. मैंने ब्रैकेट्स में लिख दिया कि the positive charge is moving to the right. ठीक है, so your second finger should point in the direction in which the positive charge is moving from left to right. तो first finger को point कर दीजिएगा into the screen. Second finger को point कर दीजिएगा in the direction in which the positive charge is moving, that is from left to right. और the thumb, अगर आपने rightly सब कुछ place अपने hand पे किया हुआ है, so the thumb should be pointing in your case. अगर आपने hand को place किया हुआ है तो जरा suggestion देंगे thumb आपका कहाँ point होना चाहिए. अगर आपने left hand को place किया हुआ है ना, so आपको thumb की एक indication मिल जाएगी कि thumb कहाँ point करेगा. So आपने सही लिखा हुआ है upwards. अच्छा, जिसको आप लोग upwards लिख रहे हो ना, जो आयशा लिख रही है या जो रायान ने लिखा हुआ है, upwards is fine, है ना. और अगर बाकी लोग भी try करना चाहते हो तो करके देख लो. So let me repeat myself. The first finger points in the direction of the magnetic field. So cross का मतलब है magnetic field goes into the screen. So first finger goes into the screen. अच्छा, then the second finger points in the direction in which the positive charge is moving. So the positive charge was moving to the right, from left to right. So your second finger should be pointing rightwards. और thumb upwards point करेगा, as Aisha stated और Ryan stated. रोहिल, तुमने वर्डिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड गलती से लिख दिया है, बाकी सही लिखा है तुमने. तुमने गलती से इलेक्ट्रिक लिख दिया. It should rather be magnetic. Statement is correct. सही, ओके. सो अपवर्ड जिसको आप कह रहे हो ना, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करता हूं तो आपको नजर आ जाएगा मैंने किस तरह से लिखा है. अपवर्ड्स इज फाइन वैसे. और आई थिंक यू वुड आल्सो एग्री कि यू कैन आइदर से अपवर्ड्स और ऑल्टरनेटली यू कैन से
कि the direction of the force is going to be, ये भी सही है. So either the term upwards, depending on the orientation, upwards भी सही है, और then alternately towards the top of the screen भी सही है. दोनों में से जो भी wording सही लगती है. Which means अगर मुझे diagram पे draw करना हो ना, मैं बना के दे रहा हूँ. So the next part was complete the diagram to show the deflection of the charge particle. So वो बना के दिखा देता हूँ. So upwards और towards the top of the screen, तो kind of ऐसे करके बना दीजिएगा. और मैं mention कर देता हूँ deflects upwards. अच्छा, मैं एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था. हाँ, शाकिब ने दोबारा लिखा है. शाकिब, मेरी सजेशन होगी नो, क्योंकि राइट हैंड अलग से आगे जाके यूज में आएगा. फिर तुम ये भूल जाओगे कि राइट को एक्चुअली कब यूज करना है. तो मेरी सजेशन है लेफ्ट को यूज करना. एंड जस्ट रिमेंबर फॉर द नेगेटिव चार्ज द सेकंड फिंगर नीड्स टू पॉइंट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव चार्ज. वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि राइट को अलग से यूज करेंगे हम लोग. तो अगर तुमने यहाँ पे ये सोचा ना कि यार नेगेटिव के लिए मैं राइट यूज कर लेता हूँ, जब राइट यूज करना होगा तो फिर वहां पर कंफ्यूजन ना हो जाए. सही है. ऑल राइट. थंब खुद ही ऑपोजिट हो जाएगा रोहिल. जब आप सेकंड फिंगर को ऑपोजिट करोगे तो थंब जो अपवर्ड जा रहा था वो ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड्स हो जाएगा. सो थंब खुद ही ऑपोजिट हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा. बिल्कुल सही है. यस, वी कैन यूज दैट टर्म रायन जो तुमने लिखा हुआ है. ठीक है गाइस, आगे प्रोसीड कर रहा हूँ. नाउ जो एक चीज मुझे इस पूरी वर्किंग की बेसिस पे एक्सप्लेन करनी है ना, दैट इज द डायग्राम व्हिच आई हैव शोन यू. जरा एक मिनट के लिए केयरफुली इस डायग्राम को देखिएगा. नाउ फॉर द टाइम बीइंग, ignore the idea of magnetic field and just concentrate towards जो आपने circular motion में पढ़ा था. And remember, in circular motion you were taught कि imagine करें there is an object. The object could be a ball or something. ना, that's the red colored circle. It's moving in a clockwise direction, as you can see. Rather clockwise नहीं, anti-clockwise, I'm sorry. So there is a ball at the lowest point. It's moving in an anti-clockwise direction, as you can see. If I were to ask you, um, ये जरा suggestion दे, what should be the direction of the velocity of the ball at the bottommost point? तो कोई suggestion देगा कि bottommost point पे how should I mark the direction of the velocity? तो आप statement में लिख कर दे दो कि for a ball moving in an anti-clockwise direction, as you can see, at the bottommost point, what will be the direction of the velocity? अभी force नहीं, सिर्फ velocity का direction. Tangential सही है जो राया ने लिखा है, मैं draw करता हूँ. Check कीजिएगा. So tangential का मतलब है ये बनेगा. ओके. अच्छा, अब जरा कंपेयर करें दोनों डायग्राम्स को. मैं हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ, जरा चेक करें. वेलोसिटी को देख लें और वेलोसिटी के साथ कंपेयर कर लें. ठीक है, तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी दोनों में लग रही होगी. एक बात तो ये हो गई. नाउ इन द टॉप डायग्राम, सो हैव अ लुक टुवर्ड्स द टॉप डायग्राम. इफ आई वुड हैव आस्क्ड यू कि आपको फोर्स मार्क करना है, वुड यू एग्री? आपने खुद ही कहा था कि फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड्स था, व्हिच मींस कि अगर मैं डायग्राम पे फोर्स को मार्क करता तो अपवर्ड्स का मतलब है यू वुड एग्री मैं ऐसे करके मार्क करता. सो सिमिलरली, इफ आई आस्क यू कि आप सर्कुलर मोशन वाले केस में भी मुझे फोर्स का डायरेक्शन सजेस्ट करें, तो कुछ बेहतर वाली वर्डिंग लिखेंगे फोर्स के लिए कि बॉटम वाले डायग्राम पे फोर्स का डायरेक्शन क्या बनेगा. प्रॉपर वर्डिंग लिखिएगा. टुवर्ड्स द सेंटर, जो आई थिंक रोहिल ने लिखा है. टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. मैं ड्रॉ करता हूँ, आप देखिए.
Now compare the two diagrams. The diagram for the circular motion and the diagram for the magnetic field. And try to recognize कि दोनों diagrams में आपको क्या similarity नजर आ रही है. And I'm sure आ रही होगी. इसको भी देखिएगा, इसको भी देखिएगा. और आई थिंक अगर आपको सिमिलैरिटीज नजर आ रही है जो आयशा ने स्टेटमेंट में लिखा है, दैट सिमिलैरिटी इज दैट इन बोथ द डायग्राम्स, सर्कुलर मोशन वाले में भी और मैग्नेटिक फील्ड वाले में भी, इट अपीयर्स दैट द फोर्स एंड द are both making an angle of 90 degrees with each other. इन दोनों में आपको ये सिमिलैरिटी नजर आ रही है. And if you're okay with this similarity, force and the velocity are both perpendicular. So then we can come up with the following conclusion. मैंने conclusion slide पे लिखा हुआ है. तो पहले तो स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है. So my basic statement is, if force and velocity are perpendicular, then we can expect the object to perform circular motion. Fair enough. ठीक है ना? This wording is for this diagram. If the force and the velocity are perpendicular, then we can expect the object to perform circular motion. Consequently, आगे मैंने conclusion लिखा हुआ है, वो भी आप read कर लें. Hence, we can conclude that a charged particle moving in a magnetic field must also perform circular motion. So if you compare the two diagrams with each other, the fact that we have established is that in both diagrams, force and velocity appear to be mutually perpendicular to each other. Now, based on the idea of circular motion, we already know that if force and velocity are both at right angles to each other, then the particle must move in a circle. So since in a magnetic field as well, this condition seems to be applicable, therefore we can say that a charged particle moving in a magnetic field must also perform circular motion. See? Now, which is why सबसे पहली चीज तो ये कि जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाया था, काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जो डायग्राम आपने बनाया है, the diagram which I'm highlighting with the pink marker, this is a very common question. वो कहते हैं सर this does not look like a circle. So do recognize यार circular motion doesn't mean it has to be a complete circle. So if you get a chance to construct a complete circle, बिल्कुल बना लीजिएगा शौक से. अगर complete circle की गुंजाइश नहीं मिलती है, तो सेमी सर्कल बना देना. अगर सेमी सर्कल का भी चांस नहीं मिलता, तो क्वाड्रेंट बना देना. और अगर क्वाड्रेंट का भी चांस नहीं मिलता, then at least make an arc of a circle, if not more. So circular motion doesn't mean पूरा सर्कल बनना जरूरी है. Rather the circumstances will decide कि पूरा सर्कल बनेगा या नहीं. बन जाए तो well and good. नहीं बनता तो go ahead and make a semicircle out of it, or then a quadrant. और अगर वो भी नहीं बनता, then simply an arc of a circle. The question does arise, सर्कल कब बनेगा या सेमी सर्कल बनने की गुंजाइश कब बनेगी, कब बन सकता है. अगर मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को फर्दर स्क्रॉल डाउन करूं, तो नोट कीजिएगा अब मैंने डायग्राम के अंदर ये किया है कि इट्स द एग्जैक्ट सेम डायग्राम. यू लुक केयरफुली यू वुड अप्रिशिएट कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड को काइंड ऑफ थोड़ा सा स्क्वायर के बजाय रेक्टेंगुलर शेप का बना दिया है. आई हैव चेंज्ड द फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. प्रीवियसली हैव अ लुक, इट वाज काइंड ऑफ अ स्क्वायर शेप, बॉक्सी शेप में थी ना. और अब नोट कीजिएगा मैंने थोड़ा सा इसको काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर कर दिया है. तो श्योरली इसके अंदर मेरे पास थोड़ी सी फ्रीडम ऑफ स्पेस ज्यादा आ जाएगी. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई अगर इस तरह का शेप हो, तो इफ नॉट अ सर्कल, at least I can make an attempt to construct a semicircle out of it. Kind of like this.
तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अप्रिशिएट कि कंप्लीट सर्कल बनना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. अगर बन जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनता तो सेमी सर्कल बन सकता है. अगर उसकी भी स्पेस अवेलेबल नहीं है तो क्वाड्रेंट बन सकता है, और अगर उसकी भी स्पेस अवेलेबल नहीं है, सो एन आर्क ऑफ अ सर्कल. But nonetheless, the point remains that whenever force and velocity are perpendicular, the motion prescribed will certainly be circular. ठीक है, whether or not the circumstances allow for a complete circle, that's a different argument. ठीक है, तो अगर गुंजाइश बनेगी तो जरूर बना लेंगे, नहीं बनेगी तो even an arc of a circle kind of works for us. ओके रोहिल, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर अभी आ जाएगा. सो मैं थोड़े से टॉप से इरेज आउट करता जाऊं चीजों को. Now, once we have established a circular motion, so I think then the next question that we need to answer is, yeah, how can we find out the radius of the circular arc? So radius कैसे calculate करेंगे ना, उसकी justification. So I think the first statement would be कि it's the magnetic force which is responsible for providing the centripetal force. So since the particle is moving in a magnetic field, so this statement makes sense. कि the magnetic force is responsible for providing the centripetal force. यहाँ से working start करते हैं. So Fm for the magnetic force, Fc for the centripetal force. Apply करते हैं. So magnetic force जो अभी formula ऊपर किया था ना, I'm using that same formula which was B Q V. Centripetal force के तो काफी सारे formulas किए थे. One of them was mv square upon r. I'm writing down r with a red marker because my interest is to calculate the radius. If you simplify r to make r the subject basically, you'll end up getting this answer. Simplify आप करके देख लो. So you know the relationship indicates, simplify कर लीजिएगा. So the relationship indicates that the radius of the circular arc depends on four factors. So it basically depends on the mass of the charged particle. It depends on the velocity of the charged particle. It depends on the strength of the magnetic field, that is magnetic flux density, and it depends on the magnitude of the charged particle. So mass times velocity, mv, divided by b times q. So mv upon bq is a formula that can be used to help us calculate the radius of the circular arc in case when a charged particle enters a magnetic field and performs circular motion. Now, sorry, before I continue further, दो चीजें एज अ साइड नोट और बता दूं. तो एक तो ये जो रोहिल ने पूछा है ना, पहले उसका आंसर दे दूं कि इमेजिन इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा, सॉरी, angular velocity that is omega. So you know जो वर्किंग अभी करी थी ना, एग्जैक्टली उसी वर्किंग को यूज कर लेते हैं, बस फॉर्मूला चेंज कर दूंगा. So again the magnetic force is responsible for providing the centripetal force. So basically the same working as done earlier on. सेम फॉर्मूले से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, बस दो चेंजेस कर लीजिएगा. मैग्नेटिक फोर्स का तो फॉर्मूला ऑलरेडी है, सो दैट इज बी क्यू वी. सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑब्टेनिंग ओमेगा,
So I believe we should go with this formula. This time I'm writing omega with the red marker. Because previously मैंने r को red से लिखा था ना, because मुझे radius obtain करना था. So यहाँ से calculate करके omega का एक तो आंसर आ जाएगा. These formulas are never asked directly. They always ask you in the first step to derive the formula and then the question continues. So my suggestion would be derivation ही साथ साथ learn कर लो. You're better off that way. So omega का result ये बन रहा है. Or similarly, if you are asked to find the time period, if you're wondering, okay, time period for what? So time period for the charge particle to perform circular motion. Or you can say time period is the time taken for the charge particle to complete one circle. जो भी wording आपको सही लगे. So use the answer of omega, or I think time period का भी answer आ जाएगा. आप simplify करके देख लो. मैं direct answer लगा रहा हूँ. Do establish one fact as well before I continue further, that the formula for the time period and the formula for omega, मैं wording की form में लिख देता हूँ. Read आप खुद ही कर लें. मेरा ख्याल है आप खुद ही follow कर लेंगे. Both omega and time period are independent of the radius. ठीक है. So the time period as well as omega do not depend on the radius of the circular path. So whether the radius is larger or smaller, whatever, the time period and the angular velocity omega will remain the same. Okay. अब एक working जो और भी करनी है apart from these formulas, and that is जो मैंने आगे का statement लिखा है. आप suggest करना. पहले मैं read कर दूं. So what if the velocity of the charge particle decreases continuously due to presence of some resistive force? So think of a charge particle whose velocity continuously decreases due to presence of some kind of a resistive force. I'm sure you'd appreciate कि अगर resistive force causes the velocity to decrease continuously, then assuming कि बाकी तो सारे factors constant होंगे, so a reduction in the velocity is then invariably going to affect the radius as well. So if you are expected to find out कि charge particle entering a magnetic field has a continuously decreasing velocity, then how would the shape of that charge particle be different? So velocity reduce होने से radius आपका decrease करता चला जाएगा, which means the path now is no longer going to resemble the shape of a circle, but rather circle से कोई better wording हो सकती है रोहेल, keeping in mind if the velocity is decreasing, oval से better wording. So if the velocity is decreasing, the radius will continue to decrease.
मोहित वाली वर्डिंग ज्यादा बेहतर है, स्पाइरल, जो नवल ने लिखा है, काइंड ऑफ लाइक दिस। जरा रीड कर लें। सो पहले मेरा स्टेटमेंट फॉलो कर लेना और फिर डायग्राम देख लो। सो r is directly proportional to velocity. So if the velocity decreases continuously, then the radius also decreases. Hence, the shape will now be more like a spiral rather than a circular shape. नीचे मैंने बना के दे दिया है। So, so if a charged particle is moving in a magnetic field, so if the velocity remains constant, then the radius of the circle will also remain constant. So then it will be a perfect circle, so as to say. But if due to some odd reason the velocity keeps decreasing continuously, then the radius will also keep decreasing. And then in that case, the shape will resemble more like a spiral as opposed to a perfect circle. See? Okay. अच्छा, 1 मिनट देना, मैं जरा टॉप से देख लूं मुझे क्या क्या इरेज करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो द नेक्स्ट थिंग इज, या आपको थोड़ा सा खुद रीड करना पड़ेगा। So the next working is, तीनों पॉइंट्स पढ़ लो और कोई पॉइंट अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो ना तो मुझे बता देना, बिकॉज ये एग्जाम जो ऑन एंड ऑफ आते हैं तो ये आई गेस लर्न करने पड़ेंगे आपको। रीड आप लोग कर लो। सो इट कम्स अंडर द हेडिंग, what are the differences between the electrical force in an electric field versus magnetic force in a magnetic field. So statements आप लोग पढ़ लो, 4-5 लोग जरा मुझे ओके कर देना या अंडरस्टूड कर देना, और कोई पॉइंट अगर मुझे रिपीट करना हो तो डू लेट मी नो, तो मैं वो पॉइंट आपको समझा देता हूँ। तीनों पॉइंट जरा प्लीज रीड कर लो, एंड इफ यू आर डन विद द अंडरस्टैंडिंग एज वेल, तो मुझे जरा सजेशन प्लीज दे दो ओके या अंडरस्टूड करके, देन आई फ्लिप ऑन टू द सेकंड स्लाइड। तब तक आयशा जरा स्कोर तो बताओ क्या हुआ यार। बाकी लोग जरा प्लीज रीड करते जाओ while she telling me the score. ओह 78 for 2 ओवर्स कितने हैं यार? इलेवन ओवर्स, आई हैव अ फीलिंग 11.1। क्या जबरदस्त तुक्का था यार। सो बाबर आजम इज आउट या नहीं, या वो अपनी 50 करेगा? हाँ, बाबर आजम अपनी 50 करता है, लेकिन रोहिल मुझे सिर्फ एक इशू है उसकी इनिंग के साथ। अनलाइक रोहित शर्मा और विराट कोहली, दे डोंट पे पर्टिकुलर अटेंशन टुवर्ड्स कि वो खुद 50 कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दे मेक इट अ पॉइंट कि यार T20 के अंदर they keep a strike rate of above 140 या close to 150 का strike rate. This one thing which I don't like about बाबर आजम is कि इसका 120 का strike rate होता है, ये 50 करके जाता है, लेकिन at the end of the day the team is always running 10 or 15 runs short because ये अपनी 50 के चक्कर के अंदर अपनी पूरी balls खेलता है. I have hardly seen him ever going over a strike rate of 130 or 140. Generally it's 110, 120, बस इसके आसपास, और वो अपनी 50 पूरी करता है।
हाँ, आई थिंक वो एग्रेसिव नहीं है, यू आर राइट। ही वेट्स फॉर द बॉल कि वो सही बॉल आएगी तो उसको प्लेस करेगा, एंड ही वांट्स टू सी कि अच्छा मैं कवर ड्राइव मारते हुए खूबसूरत लगूं। अब मतलब T20 को यू शुड प्ले लाइक अ T20। और टेस्ट मैच के अंदर या वनडेज के अंदर आप अपना शौक पूरा करो, एलिगेंट लगने का या वट एवर। आई मीन द मोस्ट इफेक्टिव प्लेयर आई रिमेंबर वाज डिविलियर्स फॉर T20 यार, एंड ही स्टिल इज। ही इज नॉट एलिगेंट बिकॉज वो स्कूप भी मार रहा होता है, वो रिवर्स पैडल स्वीप भी मार रहा होता है, और इधर भी मार रहा होता है, उधर भी मार रहा होता है, पूरे 360 डिग्रीज पे मारता है। बट ही गेट्स द जॉब डन बिकॉज वो 150 के स्ट्राइक रेट के साथ अब भी चल रहा होता है, जब भी कभी मैच में देखो तो आई थिंक ऐसा प्लेयर चाहिए होता है T20 के लिए। एलेक्स हेल्स एंड बाबर आजम आर आउट, ओके। ओके, चलो अच्छा ही हुआ। नहीं नहीं, ये कराची विल विन। ओ नो, नॉट बाबर, नहीं, अच्छा हुआ आउट हो गया। आई थिंक कराची विल विन बिकॉज ऑफ दिस, तुम देख लेना। ओके गाइस, आगे चल रहा हूँ। सो आई एम होपिंग के डिफरेंसेस तुम लोगों ने फॉलो कर लिए हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्किंग। ऑल राइट, सो अब डायग्राम के अंदर आई एम कंस्ट्रक्टिंग टू डिफरेंट सिनेरियोज फॉर यू, चेक करना। सो द डायग्राम शोज यू एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा इज पॉजिटिव, माइंड यू। सो वी नो कि अल्फा वाला पार्टिकल इज गोइंग टू गो टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेज, जैसे कि आपने लेफ्ट हैंड से मुझे जज करके बताया था। सो अल्फा गोज अप। ठीक है, मैंने इसका डायग्राम पूरा बना दिया। ऑन द सेम डायग्राम, imagine there is a beta particle as well. So beta is negative. बस माइनस लिख देता हूँ। ठीक है, तो शकीब ने पूछा था थोड़ी देर पहले कि शुड वी यूज राइट हैंड वट एवर, एंड आई टोल्ड हिम कि यार जरूरत नहीं है। इनफैक्ट यूल ऑल अग्री, जरूरत इसलिए भी नहीं है बिकॉज इफ यू नो कि अल्फा इज गोइंग अप, आप स्ट्रेट अवे खुद ही डिटरमिन कर लेना कि बीटा शुड गो डाउन। ये मैंने डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर दिया है। इफ यू वांट टू चेक द वैलिडिटी ऑफ दिस डायग्राम कि ये कितना सही बना हुआ है, सो आई गेस द आइडिया शुड बी, बिफोर वी कैन जज कि ये ठीक है या गलत है, let's start by calculating the ratio of radius of alpha is to the radius of beta. The reason why I'm interested in calculating this ratio is कि अगर ये ratio 1:1 आता है, तब तो that would mean कि हमारा diagram बिल्कुल correct है, because 1:1 का मतलब है the curvature of alpha and the curvature of beta must both be identical, kind of similar to what the diagram is showing. तो अगर ratio 1:1 आता है, which means they both have the same radius, so they must both deflect by the same amount as well. If not, तो फिर चेक करते हैं क्या करना है। So let's start by calculating the radius based on the formula that we have done. तो यार फॉर्मूला जो हमने किया था on the previous page, वो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, अप्लाई करके देख लेते हैं। So for alpha, I'll get this answer. मैं लिखता जा रहा हूँ, आप जरा numbers को check कर लें। So based on the formula, this is what my answer is going to be. Mass of alpha times velocity. I'm assuming velocity is the same for both of them, divided by magnetic flux density, which is also the same for both of them, charge of alpha. So alpha का ये result आ जाएगा based on the formula, और बीटा के लिए likewise ये result आ जाएगा। फिर calculate करके देख लेते हैं कि आंसर क्या आएगा, and that answer will imply ये diagram सही है गलत है whatever। ठीक है, तो मेरा result ये आ रहा है। If you simplify, a few functions will get cancelled out. So velocity is the same for both. That goes away. B is also the same. This also gets cancelled out. Mera final result is this. And I've given you all the values to work around with. तो पहले जरा एक नजर values देख लो। Mass of alpha 4u, where 1u is equal to so and so kilograms.
charge of alpha 2e, alpha is helium, no? So 2e, e is equal to this value. A mass of beta, electron, so same as the mass of the electron. And charge of beta, 1e, same as the charge of the electron. So I've given you the numbers to work around with. Numbers आप लगा लीजिएगा. Or if you simplify to get the values, ये काम आप खुद कर लीजिएगा. So you have the numbers, simplify कर लीजिएगा. This is what you would end up with. I've skipped the plugging in of the numbers, वो आप खुद देख लीजिएगा. Approximately ये आंसर आएगा. If you want to write it down correct to two significant figures, तो ये आंसर आएगा. No, देखो ये आंसर क्या सजेस्ट कर रहा है. 3600:1. This answer is implying कि टॉप वाला डायग्राम तो डेफिनेटली गलत है ना, because 3600:1 का मतलब है you can't expect both alpha and beta to deviate by the same amount, बल्कि rather the radius of alpha is coming out to be roughly 3600 times larger as compared to the radius of beta. So which means कि डायग्राम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. इनफैक्ट काफी चेंज करना पड़ेगा. So alpha का radius should be predominantly larger. So which is why if drawn on the same scale, mind you, I'm saying if drawn on the same scale, then this is how the diagram should look like. ठीक है, मैंने alpha को बहुत थोड़ा सा bend किया है. The reason for that is I want to appreciate the fact that alpha का radius of curvature will be thousands of times greater as compared to the radius of curvature for beta. So beta must undergo a sharp deflection, and if constructed on the same scale, then alpha should appear to be going almost straight, simply because the ratio of the radius was in thousands is to 1, 3600 is to 1 to be more precise. Okay, so diagrammatically, this is how the arrangement should look like. Having said that, अगर 1:1 का आंसर आ रहा होता ना, if the answer was 1:1, let me repeat myself, then the previous diagram was kind of correct. ठीक है, so अब आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ. जो नेक्स्ट वाली वर्किंग डिस्कस करनी है, that is behavior of a charged particle in a cross field. So ideally I would want कि यार ये वाला काम मेरा आज हो जाए पूरा. Just bear with me. So what is a cross field? पहले ये डिस्कस कर लेते हैं और फिर बाद में देख लेते हैं how would a charged particle behave in a region of cross field. Wordings पहले देख लेना. So cross field is a region in which both electric field and magnetic field are applied simultaneously such that they are mutually perpendicular to each other. Okay, so the term cross field refers to a region in which both electric and magnetic fields are simultaneously applied in a manner such that both the fields are mutually perpendicular to each other. So let me give you an example. So पहले, let's just look at one field at a time. मैंने इसको erase कर दिया है. Let's just look at the idea of magnetic field first. So we already know कि magnetic field की वजह से the charged particle is going to deflect towards the top of the page. So let me do that. So मैं charged particle की deflection को show कर रहा हूँ. लिख भी देता हूँ कि the magnetic force is making the charged particle deflect upwards. Fm करके लिख देता हूँ.
और वर्डिंग्स में अपवर्ड्स लिख देता हूँ. So this is one field at a time. So for the time being, it is just the magnetic field. Now, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से बनाता हूँ. पहले सेपरेट बना दूंगा. So let me draw the electric field separately for you. ठीक है, बनाता हूँ यहीं पर. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसको रेड से बना रहा हूँ ताकि आप डिस्टिंक्शन रख सको. There is one plate which is positive. On the other side, the other plate is negative. And again, the same charge particle is now entering this electric field. Let's see what will happen. You would all agree that this charge particle will have a tendency to go downwards. So ये मैंने इसकी downward deflection draw कर दी. और wordings mention कर देता हूँ. ये electrical field is making this charge particle deflect downwards. थोड़ी देर के लिए जरा इसको याद रख लेना. Magnetic force causes the upward deflection and electrical force causes the downward deflection. Now, if you look at the third diagram, तो I think third वाले diagram में you would agree कि अब मैंने cross field बना दी है. So carefully देखिएगा और definition के साथ match कर लीजिएगा. ठीक है, so the wording was a region in which both electric and magnetic fields are applied simultaneously such that they are mutually perpendicular to each other. That kind of makes sense. अब मैंने दोनों fields को, दोनों diagrams को superimpose कर दिया है. ठीक है, अच्छा, मोइद ने लिखा है will the charge go undeflected. So I guess मेरा statement ये होना चाहिए कि मैंने जो लिखा हुआ है ना, जरा wordings देख लें. मोइद वाला statement का kind of आंसर ही आ जाएगा, है ना, जो उसने क्वेश्चन मार्क करके पूछा है. पहले जरा वर्डिंग्स देख लें कि मैंने क्या लिखा है. जरा याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फोर्स वाज अपवर्ड्स हमारे डायग्राम में, और इलेक्ट्रिकल फोर्स वाज डाउनवर्ड्स इन द प्रीवियस डायग्राम्स. आई एम होपिंग कि वो आपको याद है स्टेटमेंट, और फिर आप इसको रीड कर लें. चाहिए हो तो जरा डायग्राम को देखते रहिएगा ताकि अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स कंफर्म भी हो जाए इफ यू वांट. नजर तो खैर आ रहा होगा आपको. अब स्टेटमेंट देख लो. ठीक है, सो द वर्डिंग इज इफ द क्रॉस फील्ड इज सेट अप as shown above such that magnetic force acts upwards and electrical force acts downwards, then provided that the magnetic force is equal to the electrical force, okay, if they are numerically equal to each other, then we can expect the charge particle to go undeflected as shown. That is, it enters the cross field from one side and exits from the opposite side. सही है ना? So मैं दोनों को बना के दिखा देता हूँ. So the magnetic force was causing the upward deflection. याद रखिएगा please. Green one. The electrical force was causing the downward deflection. Red one. And provided that the two forces are equal in magnitude, so if they are numerically equal, and as you can see, they are in opposite directions. So only provided that if the magnetic force, which is upwards, balances out with the electrical force, which is downwards, only then you can expect the charge particle to go undeflected. बना के दिखा रहा हूं. So for this condition to arise,
goes undeflected. So for this condition to arise, magnetic का formula was BQE, electric का formula was EQ. चार्ज कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर ये आएगा. Now, in case if you're wondering कि ये आंसर क्या imply करता है, what is the significance of this answer? So let me give you an example telling you कि ये आंसर क्या चीज indicate कर रहा है. सही? So मैंने क्या चीज अभी तक एक्सप्लेन करी है वो देख लेना. So मैंने ये कहा है कि if the two forces, the magnetic force and the electrical force, are opposite in direction as they are, magnetic upwards था, electrical downwards था, and if they are equal in magnitude, only then a condition can arise where a charged particle keeps going straight undeflected, as you can see. अब इसकी significance क्या है जो मैंने आंसर वर्कआउट किया है? You know this result V is equal to E upon B. इसकी importance ये है कि let's suppose ये important है, जरा please follow कर लेना. Let's suppose in a question if they give you the electric field strength as so and so, numbers में ऐसे ही दे रहा हूँ समझाने के लिए. And if they give you magnetic flux density as so and so. So अगर किसी question में they provide you with the values of electric field strength, and if they provide you with the value of the magnetic flux density. So you know, if you apply the formula just to see क्या आंसर क्या आएगा, and then to recognize कि ये आंसर आपको क्या बताएगा, this is what I'll end up with. आंसर ये आ रहा है. इस आंसर की significance क्या है? So you know, this answer is telling us that only those charged particles which will enter the cross field precisely with a velocity of 1.0 times 10 to the power of 6 meters per second are expected to go undeflected through the field. Through the cross field लिख देता हूँ पूरा. ठीक है, तो in a simple terms आप ये कह सकते हो that the charged particle whose velocity will match with the ratio of E upon B. Charged particles whose velocity will match with the ratio of E upon B are the ones who will go straight undeflected through the cross field. Okay? Up, let me set up a question. Like for example, imagine करें कि अगर आपको एक scenario given हो, there are three charges. There are three charged particles.
A, B, and C all entering a cross field. अच्छा, A की velocity given है slightly greater than the number at the top. नंबर जरा कंपेयर करते जाइएगा, नंबर कंपेयर कर लें। तो ए वाले की वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा है, बी वाले की एग्जैक्टली सेम है, और सी वाले की थोड़ी सी कम है। ठीक है, फर्स्ट वाले की ग्रेटर वेलोसिटी है, सेकंड वाले की इक्वल है, थर्ड वाले की लेसर है। एंड द क्वेश्चन आस्क्स यू कि आपको सजेस्ट करना है कि तीनों का आउटकम क्या बनेगा, है ना? कौन सीधा जाएगा, कौन सीधा नहीं जाएगा, और सीधा नहीं जाएगा तो कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे जाएगा, जस्टिफिकेशन देनी है। तो कैसे जस्टिफिकेशन देंगे ना, उसको देख लीजिएगा। पहले जरा फॉर्मूला देख लें। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला वाज BQV। तो मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इलेक्ट्रिकल फोर्स का ये फॉर्मूला था। सो इलेक्ट्रिकल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। तो कीपिंग दिस फैक्टर इनटू कंसिडरेशन, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दैट वेलोसिटी विल इन्फ्लुएंस द मैग्नेटिक फोर्स, it will not influence the electrical force, because the magnetic force depends on the velocity. The electrical force formula does not depend on the velocity. So iski basis par I guess we can come up with the following conclusion. जो पहला वाला था ना, which is A, so velocity of A is greater. Greater velocity means that its magnetic force will be greater. That is, magnetic force will outweigh the electrical force, since magnetic force, आपको याद होगा हमारे वाले वर्किंग के अंदर magnetic force was causing an upward deflection, therefore moves upwards. ठीक है, I'm hoping कि आपको ओरिजिनल डायग्राम से याद है कि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लेके जा रहा था हमारे केस में। लेट मी शो दैट टू यू अगेन इफ यू वांट। आई जस्ट हाईलाइट इट ताकि आपको याद भी आ जाए। सो मैग्नेटिक फोर्स वाज रिस्पांसिबल फॉर अपवर्ड डिफ्लेक्शन and electrical was responsible for downward deflection. So keeping that in mind, keeping हमारा diagram into consideration, मैंने ये लिखा है कि VA is greater than the benchmark value. Greater velocity means that its magnetic force will be greater, because remember magnetic force is velocity dependent.
So a higher velocity means a larger magnetic force. That is, magnetic force will outweigh the electrical force. Since magnetic force causes upward deflection, so it goes upwards. ये तो एक सिनेरियो बन गया. अच्छा, आई एम श्योर आप अग्री करोगे. वीबी के लिए सादा लिखने की जरूरत नहीं है. सो वीबी के लिए फॉर वीबी comma its velocity matches with 1.0 times 10 to the power of 6, therefore goes straight. ठीक है, तो डी वाला स्ट्रेट हो जाएगा. ये आपके पास सेकंड वर्डिंग हो गई. और थर्ड वाले के लिए मेरा ख्याल है आप जज कर सकते हैं ना. VC is less than 1.0 times 10 to the power of 6. Lesser velocity means that its magnetic force will be lesser. That is, electrical force outweighs the magnetic force, since electrical force causes downward deflection, therefore moves down. सही. सो बेसिकली इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं कि हर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी की बेसिस पर आउटकम क्या बनेगा. सो ग्रेटर वेलोसिटी, magnetic force will be larger than the electrical force, so goes up. Lesser velocity, so magnetic force will be lesser, or you can say electrical force will be greater, so it goes down. और right amount of velocity होगी, so दोनों forces equal हो जाएंगे, consequently goes straight. इसकी basis पे I guess we can say ये conclusion लिख रहा हूँ. एक example बना के class over कर दूंगा. Conclusion के अंदर the idea of cross field can be used as if you look at the terminology, the idea of cross field is can be used as a velocity selector. The name does make sense. Velocity selector का मतलब है we can select, we can separate, we can filter out particles traveling with a certain velocity and separate them from the rest of the lot. You're okay with my statement? We can velocity selector का मतलब we can separate, we can select, or we can distinguish, जो भी सही लगे, charged particles traveling with a certain velocity, and we can separate them or select them from the rest of the lot. तो थोड़े ऊपर चले जाएंगे जिन पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा, जिन पे इलेक्ट्रिकल फोर्स ज्यादा होगा वो नीचे चले जाएंगे, एंड ओनली दोज के जिनका मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल होगा वो स्ट्रेट चले जाएंगे. सो बेसिकली charged particles traveling with a certain velocity can be separated from the rest of the lot or from the rest of the bunch. अच्छा यार, मेरा ख्याल है मैं
ओवर ही कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो आई थिंक 3% आ गया है। वो अब चार्ज करने पे लगाऊंगा तो ये वैसे ही बंद हो जाएगा। ठीक है, मेरा ख्याल है मैं इस पॉइंट पर ओवर कर रहा हूँ जहाँ मैंने वेलोसिटी सेलेक्टर लिखा है। नेक्स्ट वाली क्लास में आई गेस फिर मैं इस वाले पॉइंट से कंटिन्यू आगे करा दूंगा। ठीक है गाइस, इधर ओवर कर रहा हूँ। तो अभी अपलोड कर देता हूँ बिफोर द टैबलेट गोज ऑफ। ऑलराइट गाइस, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर एंड खुदा हाफिज फॉर टुडे।